Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 8th chapter, that is Human Health and Disease, and our today's topic is AIDS. Students, AIDS is an example of secondary immunodeficiency. Now what is meant by immunodeficiency? Immunodeficiency means when a person becomes susceptible to number of infections due to some disorders of our immune system. जब हमारी body prone हो जाती है to a number of infections because there is some problem in our immune system. Now this immunodeficiency is of two types. One is primary and second is secondary immunodeficiency. Primary is present right from the time of birth. For example, SCID, severe combined immunodeficiency, in which the children they are born with total absence of B and T lymphocytes because they lack the gene for the formation of B and T lymphocytes. Whereas secondary immunodeficiency, the children they are born normal, but their immune system it gets impaired due to some infections or due to malnutrition or due to some radiations. So AIDS to have students, that is an example of secondary immunodeficiency. It means the children they are born normal, but the immune system it gets impaired due to some infections. So let's start the topic AIDS. Dear students, AIDS is a serious, fast spreading, incurable disease which has threatened the entire human population. Now, what is the full form of AIDS? AIDS means acquired immunodeficiency syndrome. AIDS refers to an acquired condition of deficiency of immune system. So AIDS is an acquired disorder. It is not a congenital disease. Congenital disease means which is present right at the time of the birth of child. So AIDS is not a congenital disease. It is actually an acquired disorder in which the immune system of the person get weakened, and syndrome means a number or a group of symptoms develops in AIDS. So the full form of the AIDS itself tells the meaning of the disease: acquired immunodeficiency. It means that AIDS is an acquired disorder in which the immune system of the person it gets weakened, and a number of symptoms it develops at the time of this disease. Now, AIDS was first reported in 1981, and in approximately the last 25 years, AIDS has spread all over the world, killing more than 25 million persons. Now, what is the causative agent? The causal organism of AIDS is HIV, human immunodeficiency virus. Now, HIV is a retrovirus. Now, what is the meaning of retrovirus? Retrovirus means the virus whose genetic material is RNA. So, HIV is having RNA as the genetic material, and it has the enzyme reverse transcriptase associated with it. This enzyme will form DNA from RNA. Now, let's look at the structure of HIV. So this is the genetic material of HIV. It consists of two identical strands of RNA with reverse transcriptase enzyme associated with it. The genetic material, that is RNA, it is surrounded by a protein coat which is known as capsid. It is then followed by a lipid bilayer, and this lipid bilayer it has glycoprotein molecules associated with it. So HIV is a retrovirus. Its genetic material is RNA, and this RNA it has reverse transcriptase enzyme associated with it. Now next, how the transmission of HIV infection takes place. Transmission of HIV infection takes place by various means. First है sexual contact with infected person.
unprotected, we can say unprotected sexual contact with the infected person, that is without the use of condoms at the time of sexual intercourse. Second, by transfusion of contaminated blood and blood products like blood cells, like platelets. So, by transfusion of contaminated blood and blood products, platelets. Third, by sharing infected needles, as in the case of intravenous drug abuses. So infected needles को share करने से drug abusers, they are so lost in taking drugs that they never uh, think that these needles are contaminated or not. And fourth, from infected mother to the child through the placenta. So these are the various ways by which the transmission of HIV infection takes place. Next, people who are at high risk of getting this infection. First, individual who have multiple sexual partners, they are at high risk of getting HIV infection. Second, drug addicts who take the drug intravenously, who takes the injections of drugs. Third, individuals who require repeated blood transfusions, जिन्हें repeated blood transfusions required होता है, for example in cancer, at the time of anemia, blood loss, or during this genetic disorder, thalassemia. So during these diseases, blood transfusion is required. So these persons who are suffering from these disorders, they are at greater risk. And fourth, children who are born to an HIV infected mother. Next, HIV does not spread through mere touch or physical contact. It spreads only through contacts with body fluids. When our body fluid, that is the blood, it will come in contact, then only the AIDS spread or the infection takes place. And it is important for the physical and psychological well-being of the infected person that the HIV AIDS infected patient not be isolated. HIV AIDS patients, they should not be isolated from the family and society for the physical and psychological well-being of these patients. There always exists a sufficient time. There is a time when the infection will take place and the first symptom will appear. So ये जो time period होता है between the infection and the appearance of first symptoms, this is known as incubation period. And student, the incubation period, it varies from few months to many years. It means 10 years. It may take 6 months for the infection and the appearance of first symptoms, or it may take many years. It may take 10 years also for infection and the appearance of first symptoms. So incubation period vary करता है from few months to many years. Next, how this HIV affects our body. Now student, this virus enters the body of the person and first it attacks on macrophages. Like in my previous lecture, I discussed about the various cells which are involved in our immune system, leukocytes, and there are many types of leukocytes. So macrophages जो हैं, they are known as soldiers and scavengers of our body. ये हमारी body को protect करते हैं from various infections. तो HIV virus पहले enter करती है student macrophages में, और we all know that it is a retrovirus. इसका genetic material क्या है? RNA है. So the RNA of the virus, it will enter into the host cell, that is the macrophage. और ये now this RNA, it is having reverse transcriptase enzyme associated with it. Now when the RNA of the virus, it will enter into the macrophage, then with the help of this enzyme, the RNA will form a copy of DNA.
So this is known as reverse transcription, and reverse transcription के through DNA formed होगा from RNA with the help of this enzyme. Now this DNA, this viral DNA, it will get incorporated with the host cell DNA, और वो क्या करेगा, होस्ट की मशीनरी को अपने ऊपर ले लेगा और होस्ट को ये डायरेक्ट करेगा दैट इट शुड फॉर्म मोर वायरस पार्टिकल्स. सो मैक्रोफाजेस जो हैं दे विल एक्ट एज HIV फैक्ट्री. सो मैक्रोफाजेस में से वायरसेस जो हैं, न्यू वायरसेस दे विल बी फॉर्म्ड, और इस तरीके से मैक्रोफाजेस जो हैं दे स्टार्ट गेट डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं. After that, this new virus progeny, they will start attacking on helper T cells. Very important, student. एड्स एक्चुअली एक सेल मीडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर है. सेल मीडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि ये हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है या सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हमने किया था, जो कि किसके थ्रू फॉर्म्ड होता है, विद द हेल्प ऑफ टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होता है. तो एड्स जो है वो एक सेल मीडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें स्पेशली हेल्पर टी सेल्स का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. एंड वी ऑल नो हेल्पर टी सेल्स क्या कर रही थी, हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को हेल्प करती हैं फॉर फॉर्मिंग एंटीबॉडीज. तो क्या होगा कि अब बी लिम्फोसाइट्स जो बॉडी के हैं दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म एंटीबॉडीज, जिसके कारण पर्सन का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीकेंड हो जाता है दैट इट गेट्स ससेप्टेबल टू मेनी अदर इन्फेक्शंस. सो ये देखो स्टूडेंट डायग्राम दिखाया गया है. दिस इज द वायरस. The virus is making its genetic material, that is RNA, to enter into the host cell. तो जैसे RNA एंटर हुआ, देखो with the help of the reverse transcriptase enzyme DNA फॉर्म्ड हो गया, और ये DNA अपने आप को अटैच कर लेगा with the host cell DNA, and it will take over the machinery of the host cell, and it will start forming new virus particles. So the macrophages, they will become HIV factory, and in this way new virus particles, they will be added into the cells, and these viruses will now start attacking on the helper T cells. So the progeny viruses release in the blood attack other helper T cells, और this entire cycle is repeated again and again, जिससे होगा क्या कि हेल्पर टी सेल्स का जो नंबर है वो ड्रास्टिकली फॉल कर जाएगा, और इस टाइम जो पर्सन है, पेशेंट है, इट विल सफ़र फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस. एंड बिकॉज जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनका नंबर इतना ज़्यादा फॉल कर जाता है दैट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस very easily. And these infections includes those which are caused by bacteria, especially mycobacterium. Especially जो mycobacterium it causes TB. तो TB जो है वो बहुत ज़्यादा होने के chances होते हैं to AIDS patients. Several other diseases which are caused by viruses or even parasites like toxoplasma. टोक्सोप्लाज्मा के पैरासाइट स्टूडेंट्स कैट के फीकल मैटर या कंटामिनेटेड फूड में प्रेजेंट होते हैं, और टोक्सोप्लाज्मा स्पेशली उन पर्सनस को अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. सो जो एड्स पेशेंट्स हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है दैट दे गेट ससेप्टेबल टू मेनी अदर इन्फेक्शंस very easily. So the patient becomes immunodeficient and is unable to protect themselves against these infections. Now, what are the main symptoms of acute HIV infection? So symptoms include weight loss, fever, pharyngitis means inflammation in the pharynx, lymph nodes में swelling हो जाती है, muscular weakness हो जाएगा, liver enlargement हो जाती है, CNS हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है जिससे मेलासी हो जाएगी, बेचैनी होती है, हेडेक हो सकता है, न्यूरोपैथी मीन्स नमनेस हो सकती है इन दी फिंगर्स एंड इन दी टोज, माउथ में सोर हो सकता है, थ्रश इट कैन अपीयर्स, स्प्लीन एनलार्जमेंट, गैस्ट्रिक
हमारी जो स्टमक है उस पे अटैक करेगा, जिसके कारण नौशिया या वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती हैं, या रैशेस जो हैं दे विल बी स्टार्ट फॉर्मिंग ऑन दी स्किन. सो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ HIV infection or AIDS. Now, how the AIDS is detected? Student, AIDS is detected by a test that is ELISA test. और ELISA की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे. इस टेस्ट के थ्रू, या ये एलिजा जो है दैट इज़ अ बायोकेमिकल टेक्निक used in immunology to detect the presence of antibody or antigen in a sample. Now the person who is suffering from any disorder or like AIDS, तो उसकी बॉडी में या तो एंटीजन्स होंगे. एंटीजन क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स विच आर एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है. तो एलिजा टेस्ट में या तो एंटीजन्स को डिटेक्ट किया जाता है या एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है. तो जिस पर्सन को एड्स है तो नेचुरली उसके बॉडी में एंटीजन्स होंगे, तो एंटीजन्स को डिटेक्ट करके हम एड्स जो हैं उसको डायग्नोज कर सकते हैं. या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, इसको भी यूज़ किया जाता है टू कंफर्म द रिजल्ट्स ऑफ एलिजा टेस्ट. सो एलिजा जो है वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है. वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के थ्रू एड्स को जो है वो कंफर्म किया जाता है. सो दिस इज़ द एलिजा टेस्ट स्टूडेंट्स. तो एलिजा टेस्ट में देखो कि अगर पेशेंट जो है दैट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो इट मस्ट बी हैविंग एंटीजेंस. तो पेशेंट का सैंपल लिया गया, तो जो वायरस के पार्टिकल्स हैं दे आर अटैच्ड टू दी सरफेस. फिर एंटीबॉडीज़ डाले गए, तो नेचुरली वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपने आप को एंटीजन के साथ अटैक करेंगे. और नेक्स्ट क्या किया जाता है स्टूडेंट? ये जो एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट एक एंटी 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 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड किया जाता है विच इज़ दी सबस्ट्रेट, और उसके साथ एक एंजाइम लिंक कर दी जाती है. तो ये एंटीबॉडी जो है दैट विल जॉइन विद दी एंटीबॉडी, और जिसके कारण एक कलर चेंज जो है वो प्रोड्यूस होगा. तो कलर चेंज से HIV जो है उसे डिटेक्ट किया जाता है, और दिस इज़ दी एलिजा टेस्ट. नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? कई एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं इनको यूज़ करके पेशेंट की जो लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, बट डेथ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता. मतलब कई ऐसे ड्रग्स डिस्कवर्ड तो हुए हैं जो पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देंगे, 2 या 3 साल और एनहांस कर देंगे, बट कोई क्योर जो है वो अभी तक इसका डिस्कवर्ड नहीं हुआ है. सो प्रिवेंशन क्या है एड्स के? एज एड्स हैज़ नो क्योर, तो प्रिवेंशन ही स्टूडेंट बेस्ट ऑप्शन होती है. स्प्रेड इट कैन बी लिमिटेड बाय कॉन्शियस एफर्ट्स और बिहेवियर पैटर्न्स. मोर इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द न्यूबॉर्न. So prevention is better than cure. So we, as AIDS, it is having no cure. So prevention is the best option. नाउ मेनी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लगी हुई हैं टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़. फॉर एग्जांपल नेको, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. और कई दूसरी NGOs जो हैं दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स. और इसी के तहत वी ऑल नो दैट 1 दिसंबर दैट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे. और by celebrating this day, people they are educated how the disease spreads, how we can prevent this disease, etc. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी a number of programs conduct करती है to prevent the spreading of the HIV infection. Now, prevention and control methods. So what are the various prevention and control methods for AIDS? Making blood transfusion safe from HIV, and ensure the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals. Ensure करना चाहिए कि जो needles या syringes use की जा रही हैं at the time of collection of blood sample, तो it must be disposable. Free distribution हो condoms की. ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल किया जाए. एडवोकेटिंग सेफ सेक्स and regular checkup for HIV in susceptible populations. So student, this was all about AIDS. Our next disease which is affecting our immune system, that is allergy.
सो एलर्जी जो है स्टूडेंट्स वो एक एग्रावेटेड रिस्पॉन्स है ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है हमारा इम्यून सिस्टम का टूवर्ड्स द एंटीजन विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, एंड दिस इज नोन एज एलर्जी। अब जिन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है दैट इज़ नोन एज एलर्जेंस, और ये एलर्जेंस माइट्स हो सकते हैं इन डस्ट, दे कैन बी पॉलन ग्रेन्स, इट कैन बी एनिमल डैंडर, कईयों को सीज़न चेंज होने से एलर्जी होती है। सो जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का टुवर्ड्स द एलर्जेंस present in the environment, that is known as allergy. And we all know that at the time of allergy, an antibody IgE, immunoglobulin E, is produced by our immune system. Now what are the symptoms of allergy? Sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, these are the symptoms of allergy. और एलर्जी के टाइम होता क्या है स्टूडेंट, देयर इज रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक हिस्टामीन और सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स, जो कि हमारे ब्लड कैपिलरीज को डायलेट कर देती हैं। और कई बारी एलर्जी इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है बिकॉज इतने ज़्यादा हिस्टामीन और सेरोटोनिन रिलीज होता है फ्रॉम द मास्ट सेल्स कि ब्लड कैपिलरीज इतनी ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं कि सारा का सारा जो फ्लूइड है इट स्टार्ट्स पासिंग आउट फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज़, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रास्टिकली फॉल हो सकता है और इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है विद इन अ शॉर्ट टाइम। सो कई ड्रग्स जैसे कि एंटी हिस्टामीन, एड्रेनालिन्स और स्टेरॉइड्स जो हैं वो क्विकली एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। हमारी जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है उसने हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीकन कर दिया है और लोअर कर दिया है, एंड वी हैव बिकम मोर ससेप्टेबल टू एलर्जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिसऑर्डर दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। Now our immune system it can easily differentiate between self and non-self. Self means this is an organ or of body, and this is a foreign particle. So our immune system it can easily differentiate between self and non-self. But in some cases what happens, our immune system it starts attacking on own cells. दिस इज नोन एज वॉट ऑटो इम्यूनिटी। और इसका एग्जैक्ट रीज़न जो है स्टूडेंट वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। इट मे बी genetic reasons also, there may be genetic reasons also that our immune system it starts attacking on own cells. हमारा immune system हमारी self cells, नॉन सेल्फ पे तो अटैक करना ही है हमारे इम्यून सिस्टम ने। हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक करता है, बट समटाइम्स आवर इम्यून सिस्टम इट स्टार्ट्स अटैकिंग ऑन बॉडीज ओन सेल्स। दिस इज नोन एज what ऑटो इम्यूनिटी, and this can cause damage to the body, and this is known as autoimmune disorders. इसमें एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता क्या है कि जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है विच कवर्स द जॉइंट्स दैट इज अटैक्ड बाय द एंटीबॉडीज, जिसके कारण जो जॉइंट्स हैं दे बिकम रेड इन कलर, दे गेट स्वोलन और पेनफुल हो जाते हैं। So students, rheumatoid arthritis जो है that is an example of autoimmune disorders in which the antibodies they start attacking on the membrane that covers the joints. So students, this was all about the various disorders of immune system. So today we discussed about AIDS, allergy and autoimmune disorders. We all know that AIDS it is caused by a virus that is known as HIV virus, and this HIV it is a retrovirus whose genetic material is RNA, and this AIDS it is a cell mediated immune system disorder. Cell mediated immune system disorder means it attacks on cell mediated immunity which is due to the T lymphocytes. So in AIDS especially helper T cells का नंबर जो है वो drastically फॉल हो जाता है, और हेल्पर टी सेल्स ही बी सेल्स को हेल्प करते हैं टू फॉर्म दी एंटीबॉडीज़। सो एड्स में पर्सन का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीकन हो जाता है दैट इट गेट्स ससेप्टेबल टू वेरियस अदर इन्फेक्शंस। एड्स का
अब तक कोई इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं ढूंढा गया है। कई ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एड्स पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो क्योर। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो इस डिज़ीज़ को हम प्रिवेंट ही कर सकते हैं, एज देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस डिज़ीज़। Next, we have done allergy. Allergy, it is a hypersensitive response of our body towards the allergens. और एलर्जी के टाइम स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में हिस्टामीन, सेरोटोनिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी ब्लड कैपिलरीज को डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण एक्सेस वाटर जो है इट कैन पास आउट फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज़, जिसके कारण देयर विल बी अ ड्रास्टिक फॉल इन द ब्लड प्रेशर एंड द पेशेंट कैन डाई विद इन few seconds if a proper medication is not taken soon. And last we have done autoimmune disorders. Autoimmune disorders में हमने पढ़ा that sometimes our body that is unable to differentiate between self and non-self. It may be due to genetic reasons or the reasons they have not yet discovered so far. So when the immune system it start attacking on own cells, this is known as autoimmunity, and rheumatoid arthritis is an example of autoimmunity. So students, this was all about today's topic, that is immunity. Till then students, thank you.